Good morning students, welcome to our Medhavi classes. So last class in physics we were discussing about Gauss theorem. That was very interesting. अब मैं तुमको एडा भी पहले गोटी जिनसे कहती कि Gauss theorem is nothing but it is a representation of our Coulomb's law. जोड़ा कि मैं तुमको कहती पहले देखो phi equal to 1 by epsilon naught q. Last class देखो हम कौन कहते phi means electric flux density. So here electric flux is equal to 1 by epsilon naught times of total charge resides in the surface. देखो बिले हमरो गॉसियन थ्योरम बा गॉस थ्योरम आ हमर जो कूलम्स लॉ अछि ता भीतर डिफरेंस कोन होछि कूलम्स लॉ सबले हमर कोन पिले गोटे पॉइंट चार्ज ऊपर हमर बेस करी थाए दैट इज हम कोन कहितले पिले F = 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. But in case of your Gaussian law by Gauss theorem, your phi equals to 1 by epsilon naught q, that is your Gauss law. एबे हम कोन करिया पिले ए जो Gauss law रो कोडे एप्लीकेशन हम देखिबा जोडे कोन होछि पिले हमरो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट. देखो ए जो एप्लीकेशन पिले बहुत इंपोर्टेंट तमरो एग्जाम पे भी लगी. देखो प्रथमे तमे गोटे जिंस मन रखो व्हाट इज Gauss theorem. Gauss theorem means it implies your total surface पिले तमरो surface जोडा कि तमरो चार्ज अछि एनी surface पिले surface may be spherical cylindrical लगी तमर जहां भी गोटे तमरो 3 डायमेंशनल surface तमरो अछि पिले से surface ऊपर हम कोन करछे हमें surface ऊपर जते चार्ज अछि ताको कंसीडर करछे आ ताको धरि के हमें बाहर करिया पिले हमरा जी कोन टोटल चार्ज बा सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट. ओके देखो पिले आर हमर दीडा केस अछि हला infinite plane sheet रा हमर दीडा केस अछि. one is for non conducting charge and another is for conducting charge. Conducting sheet actually देखो sheet माने हम कोन बुझु पिले तमे इमेजिन करि परिबो तमरो गोटे पेपर शीट टाइप रो हला कि दिस इज अ शीट ऑफ पेपर. ओके जार हमर कोन देखो पिले हमरो कोन अछि 1 2 3 4 four sides are there just like your blackboard बा ग्रीन बोर्ड हम जहा भी कहूचे ठीक अछि तार हमर कोन अछि पिले four sides are there and it is a sheet of paper that can be conducting or non conducting. जदि मु पिले नॉन कंडक्टिंग कथा कहूच माने तुम इमेजिन करि परिबो गोटे पेपर हो किबा गोटे हमर ब्लैक बोर्ड हो दिस इज नॉन कंडक्टिंग हला कि सेथिरे हमर जो चार्ज रहि परिबो पिले दैट इज स्टैटिक चार्ज. ओके स्टैटिक चार्ज माने हमें आगु डिस्कशन करछे पिले कोन जदि हम गोटे जिंस कोन करछे रब करछे देखो पिले मु तीनटा तुमको प्रोसीजर कहितली दैट इज फ्रिक्शन कंडक्शन और इंडक्शन. सिंपल वन फ्रिक्शन जदि हम कोन करछे पिले गोटे तमर कोन अछि एनी सरफेस अछि बा एनी तमर गोटे सब्सटेंस अछि ताको हम कोन करछे आ गोटे सब्सटेंस संगे रब करछे. ओके दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन. सो इन फ्रिक्शन व्हाट हैपेंस चार्ज फ्रॉम वन बॉडी ट्रांसफर फ्रॉम टू अनदर एक्चुअली दैट इज योर फ्रिक्शन. तो ए फ्रिक्शन रे भी हमर चार्ज कंडक्शन होची आ जो चार्ज ता हमर रहउची पिले दैट इज एक्चुअली स्टैटिक चार्ज. बट इन केस ऑफ योर कंडक्टिंग शीट रे हमर पिले कथा लगा टिके बिकॉज़ कंडक्टिंग शीट रे हम कोन करछे कंडक्शन होची इलेक्ट्रिसिटी रो आ सेडी हमर कोन पिले जेतेबेले जाय तमर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होतबो से तमर शीट रे इलेक्ट्रिक चार्ज हमर रही पारिबो. सो इन फर्स्ट केस we shall discuss about the non-conducting flat sheet actually pile just a second. Okay so it is non-conducting flat sheet. Okay so we shall discuss the electric field due to infinite plane sheet that is non-conducting. Okay so let me draw it for you. So let us consider a flat sheet of charge, okay, like this one. Okay so let us consider a flat sheet of charge that is A B C D. Okay imagine करो पहले देखो मु तुमको एबले जो ड्रॉ करछि डोंट थिंक दैट कि तमरो माने जो शीट तमरो ए जो शेप रो अछि इट इज परफेक्टली रेक्टेंगल शेप इन रेक्टेंगल शेप पहले बट इमेजिन करो ए जो रेक्टेंगल शेप ता हमर जो सीधा अछि पहले ताको हम कोन करछि टिके बेंड करछि. ओके सो ए जो बेंडिंग ता मोइडी शो करे पे जस्ट खाली ड्रॉ करछि सो डोंट कंफ्यूज. सो दिस इज ए नॉन कंडक्टिंग फ्लैट शीट ऑफ चार्ज योर A B C D ठीक अछि. ओके सो लेट sigma is equal to surface charge density. So let me remind you first one thing that is whenever you are taking a surface any surface okay
सो लेट इट बी योर नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग ओके सरफेस रे हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी रो माने कोन पिले तमे मन रखिबो q by a चार्ज बाय एरिया मु आगु तुम डिस्कशन करथि पिले dq by ds सेम जिंस हमरो तो चार्ज बाय एरिया दैट इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी सो दिस इज our कोन पिले सिग्मा ओके सो नाउ हाउ वी शैल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तमे गोटे जिंस मन पका पिले हम इलेक्ट्रिक फील्ड केमिति कैलकुलेशन करथले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेशन करिया पे आमे गोटे सबले पॉइंट को नउथले एनी पॉइंट देखो लेट आ चारिपटे हमर कोन अछि पिले इलेक्ट्रिक फील्ड अछि ओके सो व्हाट वी आर डूइंग ओके सो वी आर चूजिंग ए पॉइंट लेट p व्हाटएवर तमे जहां भी गोटे पॉइंट चूज करथिलो आ से पॉइंट रे ए टोटल सरफेस पई केते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अछि हमें ताको कैलकुलेट करूथिले बट इन केस ऑफ योर गॉस थ्योरम ओके गॉस थ्योरम हम कोन कहूची गॉस थ्योरम हमर सरफेस ऊपर कथा बेले तमे कोन करिवो गॉस थ्योरम पई तमर गोटे पॉइंट नै गोटे सरफेस रहउ पड़िवो एनी सरफेस बेले हमें जनरली गॉस थ्योरम रे जो हम सरफेस नो ताको हम कोन को जानचो ताको हम कहूचे गॉसियन सरफेस ओके गॉसियन सरफेस गॉसियन सरफेस कैन बी एनीथिंग जोटा तुम कहली पिले स्फेरिकल सिलिंड्रिकल तुम जहां भी सेप हे परिवो तो आमे एडी कोन करछ पिले गोटे इमेजिन करो गोटे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमें नौचे लेट अस इमेजिन ओके गॉसियन सरफेस रो माने कोन तुम जस्ट बुझोची गोटे मिनिट पिले ओके सो दिस इज योर गॉसियन सरफेस ओके so as you can see it is looking like a cylinder please cylinder passing through the sheet so cylinder let it is p it is q ठीक अछि पिले cylinder passing through the center of the sheet पिले okay so now this is your length r this is also length r so मु कोन कली पिले गोटे गॉसियन सॉरी गोटे गॉसियन सरफेस हम नेची सिलिंड्रिकल सरफेस pq जहार की लेंथ होची हमर टोटल पिले 2r तो सेंटर रो एपडे हमर कोन पिले देखो p दिस इज r एंड दिस इज आल्सो r पिले पड़े ओके वेरी क्लियर सो दिस इज ए गॉसियन सरफेस दैट इज इमेजिनरी पिले एटा सबले मन रखो इट इज नॉट ए प्योर सिलिंडर पिला माने ए पाखरे बहुत माने टिके डाउटेड पडंती जे हमर तो हमर ए जो प्लेन शीट ऑफ चार्ज अछि ता पे बाहर करछे सो व्हाट इज द नीड ऑफ दिस सिलिंडर एक्चुअली सो दिस इज नॉट एक्जेक्टली ए सिलिंडर दिस इज सिलिंड्रिकल सरफेस एक्चुअली सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरफेस मुडी जे कोनोसी भी सरफेस नहीं पारथंदी बट हमर गोटे इजीनेस पे मु कोन करछि सिलिंड्रिकल सरफेस नै छै ओके सो लेट pq बी ए गॉसियन सरफेस ओके हैविंग लेंथ 2r ओके सल्ला तापर हम कोन कले लेट द सरफेस ओके ए सरफेस हम इमेजिन कर पले देखो तमे सबले कोन करछो जते बेले गोटे सिलिंडर देखुछे नाउ इमेजिन दिस वन दिस इज अ चॉक पीस सो जमे जते सिलिंडर को इमेजिन करछो तमे चॉक पीस को इमेजिन कर पले तो चॉक पीस देखो कोन अछि हमरो केतना सरफेस अछि 3 सरफेस आर देयर 1 2 एंड द कर्व 1 okay this is called area of cross section this is one area of cross section this is another area of cross section and this is curved surface area ये तीनटा सरफेस मिसी के हम कोन होची टोटल सरफेस एरिया हमर होची जस्ट लाइक देखो पहले ए बळे तमरो so it is one surface number 1 okay let it is number 1 it is 2 and the curve 1 this one एटा पे हमर कोन होची तमरो 3 नंबर टा okay तो now तमे जानछ पहले p एवं q दुईटा तमर देखो पहले पाखापाखि कोन सेम अछि एक्चुअली आमे जदि गोटे परफेक्ट सिलिंडर हम नउचे तो सिलिंडर रो ए दुईटा हमर कोन अछि एरिया हमर पूरा सेम थाए ठीक अछि आ तार फार्मूला हम तो तुम जानि छ ऑलरेडी हम पर डिस्कशन करबा ओके गला तो लेट आर हम सरफेस को हम कोन होचे मन कर पले एठी इमेजिन करो आपको डीएस बोल नै बिजो ओके एठी मु कोन करछि ओटे अच्छा ड्रा को दोजे पाखरे ओके सो नाउ इट इज व्हाट इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ओके इलेक्ट्रिक फील्ड सो इलेक्ट्रिक फील्ड मु ई कोन बेन दिली पिले देखो जदी मु कोन करछि ए जो शीट टा जदी मु भाबुछि कि हमर पॉजिटिव चार्ज हेछि तो इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन होछि आउटसाइड देखो शीट अछि तो एपड आउटसाइड जो पड़े भी पिले तुम आउटसाइड करि परिबो सो इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन तमरो होछि आउटसाइड ठीक अछि लेट इट इज द हां तम सरफेस डीएस इट इज आल्सो सरफेस डीएस ठीक अछि गला तो एती कथा पिले नेक्स्ट टाइम कोन देखिबा हमरो डेरिवेशन को आसीबा तो नाउ
we will calculate the electric field due to infinite plane sheet ता माने इलेक्ट्रिक फील्ड ए जो इनफाइनाइट प्लेन शीट अछि बेले आ पई केते इलेक्ट्रिक फील्ड पड़छ हमर टोटल सिलिंडर ऊपर हम ताको कैलकुलेशन करबा देखो सिलिंडर रो मु तुम जेंति कहली पे तीनटा सरफेस अछि तो सेटा पे मु कोन करछि बेले फास्ट रो गोटे काम करछि ठी तमरो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमेजिन करो प्ले टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स माने मु तुम आगुर कहिछि बेले कोन तमर जेते लाइंस ऑफ फोर्स अछि पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो let us consider the total electric flux your phi equals to phi 1 plus phi 2 plus phi 3 why I am taking this mu kon kali pele total electric flux due to the sheet on the Gaussian surface your PQ hela ki mu kon pe phi 1 plus phi 2 plus phi 3 kali I am imagining that P पाखरे हमर जो कोन अछि पले जो हमर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आसु दैट इज phi 1 Q पाखरे हमर जो फ्लक्स आसु दैट इज phi 2 एंड ड्यू टू द कर्व सरफेस पले ए जो हमें कर्व सरफेस देखुचे ता पे हमर कोन जो आसु पले दैट इज phi 3 ठीक अछि जानि पाले बले समझसे ओके इजीनेस पे हम कोन करचे पाखरे दे दोछि पले इट इज 1 इट इज 2 एंड दिस इज 3 दिस इज माने पले कोन तमर टोटल कर्व सरफेस एरिया So don't try to write down this 1, 2, 3 in your exam. Just it is for your basic understanding. Okay. So phi is equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3. So as we know from the previous chapter, previous class, that is phi equals to 1 by epsilon naught q. This is the Gauss law. अब हमें एटा भी जानचे पहले कोन तो phi जगह हम कोन पके पड़थले integration of E dot ds. Yes, this is surface integration E dot ds that is phi तामरे कोन पले इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया सो जदी मु कोन करछि पले phi 1 कथा मनौछि तो phi 1 means I am taking this area I am considering the first area so let me tell you that is E dot ds1 okay so for your understanding I am just taking this one ds1 okay so this is for phi 1 surface 1 Now, if I am taking surface number 2, so देखो पहले कौन होचा हमारा same E dot ds2 very simple पहले किसी प्रेशर नवा दरकार नहीं and if I am taking surface number 3 it is ds1 it is ds2 the surface number 3 is your ds3 so it is your E dot ds3 ठीक अछि okay so phi 1 phi 2 phi 3 तो तीनटा में देखले पले एतिकी ओके नाउ व्हाट हैपेंस आमे ताको पले गोटे गोटे कैलकुलेशन करबा सो देखो तमे जानछो पले कोन हमरो a dot b equal to ab cos theta so that is E dot ds equal to E ds1 cos theta so देखो पले थीटा हमरो कोन होबो सबले मन रखो पले a dot b is equal to ab cos theta means theta is equal to the angle between a and b okay so if we are taking two vectors E and ds so theta is equal to the angle between E and ds तो देखो परे कोन होछ हमरो E हला एबे हमें देखिबा ds रो डायरेक्शन कोडा सबले परे मन रखो गोटे जिंसो केबेले जिंसो घोसिया पे ट्राई करिवनी एंगल टा केते होउची जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट देखो जदी मु कोन करछि दीटा हमर वेक्टर अछि दीटा वेक्टर मींस इमेजिन इट इज अ ट्रू स्ट्रेट लाइन सो ट्रू स्ट्रेट लाइन भितर एंगल मोर कोन पेले आर गोटे स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन मु देखिबी सेकंड स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन देखिबी ता भितर मु एंगल बाहर करबी दैट इज वेरी सिंपल तो तमे कोन देखुछ एटी ई रो डायरेक्शन देखिबा पाखरे ओके सो वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ ds एरिया रो डायरेक्शन कोन हबो एरिया रो डायरेक्शन देखिबा तापर हम ता भितर एंगल देखिबा वेरी सिंपल सो नाउ ई रो डायरेक्शन हम देखले पले लाइक दिस वन सो ds एरिया तमे आउट जिंस मन रखबे सबले एरिया जदि हमें कंसीडर करछे एरिया रो डायरेक्शन होची कोन पिला तारो सब बळे परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एनी सरफेस गुडे सरफेस एरिया अछि लेट दिस इज द ब्लैक बोर्ड ग्रीन बोर्ड जहां भी हेलागी तो आर डायरेक्शन को पड़े हबो सब मन रखो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ओके ए मु जदि कंसीडर करछे हमर फ्लोर पेले तो फ्लोर रो भी डायरेक्शन कोन हबो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस तो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस लाइक दिस वन सो एपडे भी हे परिबो बैक साइड भी हे परिबो किछि माने फरक पड़िबा नै तो सिमिलरली जदि मु गुडे सरफेस टा नउछि सो इट इज ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रो जो कोन अछि हमरो डायरेक्शन टा अछि कोन हो पेले परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एक्चुअली
सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस मीन्स आर डायरेक्शन भी तुम एपटे आसो पे इमेजिन कर तो डीएस रो भी तुम जो डायरेक्शन आसीबो एपटे दिगरे ही आसीबो क्लियर भाई क्लियर प्ले समझते है कि तो देखो E रो डायरेक्शन जो पड़े DS रो डायरेक्शन भी से पड़े सो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन E and DS so obviously play if two vectors are passing through a same direction then the angle between them is 0 very simple so E dot DS1 cos 0 so now coming to this one same E dot DS2 means E DS2 cos same thing the direction of electric field E and the direction of DS is equal to एटा भी तुम एपटे आसीबो y same area of cross section or direction सब perpendicular to the area that is तुम एपटे आसला पले and E and DS both are directed towards same direction so it is also cos 0 now coming to the third one your E DS3 so E DS3 cos so what will be the angle this one angle ए पाखरे कोन हो पले देखो म डायरेक्टली बतौचे तमर बुक रे केमे देछि पले देखो टिक लेंदी देथियो मे बी मु तुम सिंपलीफाई कर बते दोछि पाखरे E dot DS3 so E DS3 cos ओके देखो सब बळे गुड जिंसो इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन को पडा हमरो आइदर एपडे नल से पडे जहा भी हो तुम जोडे भी कंसीडर करले चलिबो दैट इज किछ प्रॉब्लम नै तारो नाउ इमेजिन करो सेम जिंसो मु तुम कहूची सो ए जो सिलेंडर को इमेजिन करो जदि मु कोन करची दिस इज द सिलेंडर okay this is the surface of cylinder the curved surface we are considering now the S3 okay this is the third surface माने पिला आउरी भूल बुझंती ऊपर सार ऊपरे 3 तळे 3 ए ऊपर तळे नाही पिले this is the total curved one एडा होछ हमर थर्ड सरफेस ओके तो थर्ड सरफेस रो डायरेक्शन कोन हबो सेम परपेंडिकुलर टू द सरफेस सो इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस जिमिति भी तमर हे परियो देखो ए टाइप रो तमर जे कोनसी प्रकार भी तमरो परपेंडिकुलर हे परियो तो इमिति भी हे परियो और इमिति भी हे परियो जिमिति भी इमेजिन करो सब बळे इमेजिन करो पले मुगडे 3 डायमेंशनल ए पाखे पढौछि पले 2 डायमेंशन इमेजिन करिवो बुझि परिवोनी ओके दिस इज द 3 डायमेंशनल गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस पले तो सिलिंड्रिकल सरफेस मींस तमरो जो पडी भी हे परियो पले कोडा तमरो परपेंडिकुलर टा तो एडा तमरो डायरेक्शन गला तमरो तो direction of your DS3 direction of E and E DS3 both are perpendicular to each other बुझा पड़ा पले जदि हमरा परपेंडिकुलर होचंदी then it is cos 90 ए जो लाइन टा पले तमरो ए जो टोटल क्वेश्चन द सबटो इंपोर्टेंट लाइन टा आको बुझि गेले तमर पाठ प्राय सरला तापर नेक्स्ट टाइम कोन देखिबा सिंपलीफाई कर पले E DS1 cos 0 value 1 plus E DS2 same cos 0 value 1 plus E DS3 cos 90 you know that cos 90 means it is 0 so we can put 0 here okay so now E DS1 plus E DS2 okay we know one thing from this as it is a symmetrical cylinder okay so that's why DS1 is equal to DS2 you know that okay we put ko do DS1 and DS2 so as the cylinder is symmetric so DS1 is equal to DS2 is equal to हमें आराम से DS बोली भी लिखि परिबा जरा हम पके दिले पले ओके सो E DS1 plus E DS2 is equal to ଗୋଟେ କାମ କର ओके सो E DS1 is equal to 2 E DS देखो पहले मोर गोटे स्टेप ओमिट कर देछि E DS1 जगह DS पकेली DS2 जगह भी मु DS पकेछि सो एति रे मु कोन करि पले 2 E DS मु पुट कर देली so now तुम कोन जानछो पले 2E integration of ds and you know that integration of ds is equal to s that means it is 2es okay eta amar kon amaro phi moi likhi dochi pele this implies phi is equal to 2es clear everybody so this is the derivation play but now ebe je amar complete heini because tomar khali amaro phi bharche amaro phi is equal to 2es ठीक अछि एबे हम जदी कंसीडर करछे ए जो जिंसटा हमर क्वेश्चन कोन देखो टिके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट इलेक्ट्रिक फील्ड माने हमको ई कैलकुलेट करिया को पड़िबो इट इज 5 सो लेट इट इज इक्वेशन 1 ओके ओके ठीक अछि हम काम करछि जस्ट आको टिके इरेज करछि अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड तमरो ओके सेटा तमर थाओ
बाको टिके इरेज कर दोची बेटर हबो ओके इरेज कर दोची पाखरे ठीक अछि देखि दियो टिके so this is phi is equal to 2es that is equation 1 so now what happen हमको पहले कौन कैलकुलेशन करियार अछि हमरो ई कैलकुलेट करियार अछि तो तमे जदी सिंपली देखि परियो माने हमर कोन अछि पहले phi is equal to 2es तो phi is equal to 2es so this implies phi this implies e is equal to phi by 2s हे परियो पहले बट एटा हमें आउट जिंस भी कंसीडर करिया पड़िबो व्हाट इज योर phi ठीक अछि आमे जदी पाखरे phi पकोचे जस्ट टिके मने पका पहले आमे गोट जिंस तुम कहितली तुमको सिग्मा विषय रे okay so what we know that your sigma is equal to your surface charge density is equal to your what q by a ठीक अछि q by area बा आमे एटी कोन पका पहले एरिया जगह में कोन s पकोचे ठीक अछि देखो कंफ्यूज होबनी तमे जदी एरिया को s नउचो तो s नबो एरिया को तमे जदी a नउचो तो एठी भी a नबो पहले जदी हमर एमथि होची q phi is equal sigma is equal to q by s so this implies q is equal to sigma s ठीक अछि अच्छा हो एती कथा गला तो q is equal to sigma s तो now phi is equal to 2es गोट जिंस देखो पहिले पाखरे मार्क करो phi is equal to 2es जदी पकोछि पहिले तमे कोन जानचो we know from Gauss law that is 1 by epsilon naught q phi is equal to 1 by epsilon naught q is equal to 2es देखो बेले एत्ती जे हमरो कांस्टेंट अछि देखो तापर कोन हला हमें पकेले फ्रॉम गॉस लॉ वी नो दैट phi is equal to 1 by epsilon naught q में पाखरे तुम लिखि दोची phi is equal to 1 by epsilon naught q this is from Gauss law now what देखो बेले तुम एडी कोन बाहर करछो 1 by epsilon naught q बाहर करछो q रो वैल्यू केते बेले हमरो सिग्मा into s तो पके दियो 1 by epsilon naught sigma s is equal to 2es s cancelled out so this implies e is equal to देखो बेले हमु तो e ही दरकार तो e is equal to 1 by देखो बेले कोन हिच हमर e is equal to हां तमरो 1 तो होबनी sigma by so now this is the final result e is equal to sigma by 2 epsilon naught ठीक अछि so this is the expression for electric field due to infinite plane sheet of charge okay देख लो so now this is the case 1 now if you consider case 2 देखो case 2 और case 1 पाखा पाखी 80 to 90% सेम पिले so that's why मु तुमको पूरा पूरी ए पाखरे बुझोनी okay first I will write it down case 2 ठीक अछि एरेज करछि तमर पहले case 2 मु तुम कहि दोछि कोन हमरो case 2 होछि पहले हमर कोन for conducting sheet ठीक अछि ए जो conducting sheet में हम देखु जे पहले देखो जदि हम नॉन कंडक्टिंग में शीट में देखु जे टिके पाके जस्ट डिफरेंस ता मार्क करो इट इज ए नॉन कंडक्टिंग शीट दैट मींस जदि हमर देखिया पहले सरफेस तो नॉन कंडक्टिंग शीट रो भी हमर दुटा सरफेस अछि सरफेस 1 सरफेस 2 बट आमे कोन करछे जो सरफेस रे आमे ताको चार्ज करिया पे ट्राई करछे आमे से गुटे सरफेस ही चार्ज करछे बट जदि आमे गुटे कंडक्टिंग सरफेस रो जे पहले इमेजिन करिया पड़िबो जे तमर दुटा सा सरफेस हैला कि एटा तमर गुटे सरफेस लेट इट इज पॉजिटिवली चार्ज ओके डायग्राम सेम पहले कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग बोथ डायग्राम सेम खाली एति की इमेजिन करो जे नॉन कंडक्टिंग शीट रे हमर कोन होची वन साइड रे चार्ज रहउची बट कंडक्टिंग शीट रे हमर कोन डबल साइड टू साइड रे हमर चार्ज रहउची दैट इज द डिफरेंस ओके सो एटा ही त भाबो एबीसी रो बोथ साइड रे हमर चार्ज अछि तो देखो पहले गोटे पाख जे हम सेम हबो तमे जे कोन करछो phi is equal to 2es एति की पर्यंत पहले पूरा सेम अछि मु तुम कहि दोछि तमे आउथरे जदी वीडियो रिवाइंड करि परिबो देखि परिबो phi is equal to 2s जो बाहर करछि एति पर्यंत हमर पूरा पूरी सेम अछि पहले तो डिफरेंस कोडी आसिला हमरो डिफरेंस हमर को पाखरे आसिला जस्ट गोटे पाखरे तमे जो कोन करछो सिग्मा इज इक्वल टू हला कि सिग्मा इज इक्वल टू q by a q by हमरो s बाहर करछे ठीक अछि इर जो हम s लिखि से पहले गोटे s पे बाहर करछे बट इन दिस केस यू विल टेक 2s
the region two surface containing charge, that is 2s. So this implies sigma is equal to तमरो q is equal to 2 sigma s. बस एक गोटे चेंज तापरे तमरा एज डिस्प्ले तमे कोन पकेथिलो phi is equal to 2s पकेथिलो phi is equal to 2s. ओके मोडी कंपेयर करी कर दोस तो बुझी परिबो. ओके को इरेज करछि तो phi is equal to 2es. This implies phi is equal to कौन पकड़ा हमें 1 by epsilon naught q is equal to 2es. ए पाखरे हम कौन पकले पले q जगह सिग्मा s पकेथिले इठे हम कौन पके पले q जगह 2 सिग्मा s पकेबा. तो 1 by epsilon naught 2 sigma s is equal to 2es. S cancelled, 2 cancelled. So this implies your E is equal to simply sigma by epsilon naught. बुझा पड़ा. This is for non-conducting. This is for non-conducting. This is for non-conducting sheet, that is E is equal to sigma by 2 epsilon naught. And this is for conducting, sigma by epsilon naught. Okay, this is for conducting. Okay, ठीक है. So this is the whole expression for your electric field due to infinite plane sheet, both conducting and non-conducting. ठीक है पिले. ओके देखो एबे कोन हमरो ए जो हमें क्वेश्चन ना लिखिले तार कोन हमरो दीटा एप्लीकेशन अछि. ओके सेम क्वेश्चन रो दीटा एप्लीकेशन अछि. मे बे एग्जाम रे पढि पारे तो बेटर हो तुमको बते देउ एप्लीकेशन टा. ठीक अछि मन रखले पिले नॉन कंडक्टिंग एंड कंडक्टिंग देन एप्लीकेशन. आर एप्लीकेशन टा कोन हो पिले आरो हमरो दीटा एप्लीकेशन अछि हला. सो जो दीटा एप्लीकेशन हमरो अछि पिले कोन हमरो आमे एठी गोटे सीट नहीं पिले सेठी हम कोन करिया दीटा शीट नबा. दीटा शीट नै कि आमे ताकू तार बाहर करिबा. ओके सो ओरे काम करछि. आज हमरो वीडियो तो बहुत लंबा हलानी. सो वी विल ट्राई इट इन आवर नेक्स्ट क्लास. सो टिल देन तुम को प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो. एबे हमर क्लासेस हमर रेगुलरली आछी. ठीक अछि तो थैंक यू.